Good evening, students. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So, in today's class, as you all know, we'll discuss about the SSB lecturer 2023 रो जहाँ भी question paper थिला, सेटा हमें आज discuss करिबा, right? So, good evening, everyone. You can chat with me in the chat box. तो मुझे किसी कोई बार अच्छे तो मैं कोई परिबो throughout the class. Whenever we discuss the questions, I will require all of you to answer that particular question in the chat box as well. And जब भी किसी doubts हला, किसी discrepancy हला, we will obviously reflect on that. But jodi kichi no hela, we'll move on because we have to do at least 100 of questions today, right? So ajiro kon hochi ajiro aji jaha me question kariba aguru au gote important information mu de debi that every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at 9:15 p.m. right? Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday at 9:15 p.m. what will happen na amaro to amaro discussion chalibo on English grammar, which is from basics to advanced by Shubham sir. तो इंग्लिश रिलेटेड जहार भी डाउट अच्छी जदि किछि क्वेश्चंस अच्छी से सबु रिलेटेड माने माने सबु क्वेश्चंस गुडा से सर डिस्कस करिवे, राइट? तो बिफोर दैट आमे नेक्स्ट बागु गले हमर एसएसबी टीजीटी तो माने समस्त जानि थिबो एसएसबी टीजीटी रो एग्जामिनेशन आसबा को जाउची नोटिफिकेशन बहुत दिन हेलानी आसी के थिला. तो एसएसबी टीजीटी रे आमे हिस्ट्री रो क्लासेस हमर रेगुलरली चालुची which is on Tuesday and Friday सकाळ 8:30 रे हमर क्लासेस ऐप रे चालुची. So for that, make sure you have downloaded the app and you have to subscribe to that particular course so that तमे देखि परिबो. And जो लेवल रो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करछि जो माने प्रीवियसली आज क्वेश्चन कला बेले ही मु देखेबी कि केते गुडा क्वेश्चन आमे डायरेक्टली डिस्कस करिछु जते बेले आमे क्लासेस करूथुलु ऑन एसएसबी लेक्चर, राइट? बहुत क्वेश्चंस हमने डायरेक्टली आसीथिला. एमती हेतिला सिचुएशन कि मु जस्ट एग्जाम हॉल रो बाहर लाउडो पिला माने आसे कोथले मैम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रे ए पर्टिकुलर क्वेश्चन जोटा कि मु देखेबी आजरा क्वेश्चंस रे कि ए पर्टिकुलर क्वेश्चन ता हमें डिस्कस करथुलु. So which is the benefit? Good evening Kadambini, good evening Soumyashri. So that is the importance of the doing classes regularly, right? तमे क्लासेस तमे भाबुथो कोन ही करिवार अछि बहुत गुडे. प्रत्युष गुड इवनिंग. बहुत गुडा पिला एमती अछंती जो माने कि अमर ही विद्याकर क्लासेस करके दे हैव क्वालिफाइड दैट पर्टिकुलर एग्जाम. एंड एज यू ऑल नो एग्जाम सहित माने कोन करथिलु ना इंटरव्यूज भी माने मॉक इंटरव्यूज भी रखिथिलु. दैट वाज आल्सो वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ विद्याकर क्लासेस. बुझियो छी? तो एसएसबी टीजीटी रो एलटीआर आरएचटी ओस्टेट रो सबु जाक हमरो सबु माने इंडिविजुअल कोर्सेज रहिबो एट 499. एटा बहुत ही मिनिमल अमाउंट अछि. द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू गेट. प्रणाम एवरीवन. सुशांत कुमार नायक गुड इवनिंग. सबिता रानी राउत गुड इवनिंग. सो दैट इज द अमाउंट. तमे समस्ते जो माने ऐप रे भी मोर क्लासेस अटेंड करछो सबिता, कादम्बिनी, सौम्यश्री, प्रत्युष, सुशांत समस्त जो माने क्लासेस अटेंड करछो यू नो द काइंड ऑफ वैल्यू the courses that माने that जो ऑफर हमें करछो तार किते वैल्यू रही छी. बुझियो जी? तो ए जो मिनिमल अमाउंट रही छी दिस इज नथिंग इन कंपैरिजन टू द कंटेंट, टू द एमसीक्यू डिस्कशन, टू द क्वेश्चन डिस्कशन दैट यू आर गोइंग टू गेट, राइट? So yes, we will start with the further slides. So तुमे समस्त जानि छ हमरो आरआई एआरआई आमिन सीजीएल तारो मेंस प्लस प्रीलिम्स रो प्रिपरेशन रो टोटल अमाउंट रही छी हमरो 1499 and then हमरो सीजीएल रो रही छी 2799. देखो पिला माने अमाउंट ता बहुत मिनिमल अछि. माने एटा मु बारंबार कहिबे because I believe in the particular fact that the amount is nothing in front of the content, in front of the माने the analysis, in front of the MCQs. जहाँ भी डिस्कशन होची मु लेखि के दे परिबे कि माने जहाँ भी डिस्कस होची क्लासेस रे सेटा एग्जामिनेशन रे आसुची ही आसुची. एंड तारो लाइव एग्जांपल मु आज क्लास कला बेले ही देबी. तो माने निजे देखि दबो कि जो क्वेश्चन गुडा हमें डिस्कस करथिलु जेमते कॉन्सेप्चुअल माने हमें जतो एसएसबी लेक्चरर पे प्रिपेयर करथिलु we discussed it by doing lot of MCQs. तो जो हिसाब रे हम MCQs करथिलु से सिमिलर क्वेश्चंस आस्तेला मु प्रूफ सहित आज कहिबी हला. तो क्लास रो एंड जय तो रहियो एंड जाय रहिबो. एंड एसएसबी टीजीटी रो सबु जाक एलटीआर आरएचटी ओस्टेट रो इंडिविजुअल कोर्सेज अगेन वैलिडिटी रहिला 1599. मु फुणी कहिबी ए जो सबु जाक आर्ट्स हो, पीसीएम हो, सीबीजेड हो, हिंदी हो, जो जे कोनोसी तमे सब्जेक्ट पे प्रिपेयर करछो क्वालिटी ऑफ क्लासेस इज ऑलवेज टॉप नॉच, राइट? तो सेथि पई कि तमे जाय कि इमीडिएटली लाइक ये करो
एंड सिमिलरली ओपीएससी पीजीटी देखो केते पोस्ट बाहर गवर्नमेंट पोस्ट बुझी पारछ एसएसबी टीजीटी बाहर एसएसबी एसएसबी पीजीटी देन ओपीएससी पीजीटी आरआई एआरआई आई मीन सबू जाक एबे ही बाहर बिकॉज जस्ट बिफोर द इलेक्शंस गवर्नमेंट तरफ रु जहाँ भी जॉब ऑफर्स अच्छी गवर्नमेंट ऑफिसेस गुड़ा अच्छी से गुड़ा सब बाहर जाऊँगी परे या परे वंस कोड ऑफ कंडक्ट लगी जाऊँगी ना पिला माने बहुत कष्ट हबो so you have to understand what you are fighting for तमे ते casually lightly नहीं परिबोनी जिनसटा बुझी होची you have to fight every day to secure one post जो माने भी तुमको लागुची एसएसबी काली तांकर आजी काउंसलिंग थिला तांकर पिला माने आजी रो लाइफ मु कहूची आजी 28 जनवरी रे बहुत जनकर काउंसलिंग थिला तो सेमान को अपॉइंटमेंट मिली जिवो मार्च भितरे बुझी होची ता परे फुणी नोटिफिकेशन आसीबो रिगार्डिंग एसएसबी लेक्चरर यू कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड सिमिलरली हमर ओपीएससी पीजीटी रो भी जा क्लासेस होची ओपीएससी रो पीजीटी रो एटा थर्ड फेज रो रिक्रूटमेंट बाहरची तो तमरो एटा माने भाबी नियो एटा गोटे फाइनल चांस परिका ओपीएससी रो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बाहरची बट सेटा ओनली नेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स माने देई परिबे दैट इज आल्सो माने अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू तो ए सब चांसेस तुम जदी एबे मिस कर दबो ना तमरो माने भाबी नियो वर्षे 2 वर्ष कोन 5 वर्ष एबे तमरो खाली कौन माने क्लैरिटी रहिबनी गोटे जिनस भाव तुम जदि एज अ स्टूडेंट यू विल नॉट हैव अ क्लैरिटी कि को एग्जाम पे प्रिपेयर करिवार अछि कोन केमति प्रिपेयर करिवार अछि केते एफर्ट दबार अछि तुमर जदि सेति की क्लैरिटी एबे रहिबनी तुमर 5 इयर्स जाय मन रखिथिबो बहुत कष्ट लागिवो से 5 इयर्स जेतोले तुमको जणा पडु नथिबो जेतोले तुमर कोर्स माने तुम प्रिपेयर्ड थिबो सब पई कि एंड तुम भाबुथिबो कि एग्जाम आसंता किछि ओडे मु दियंती से जो फ्रस्ट्रेशन टा को अवॉइड करिया पई दिस इज द राइट टाइम This is the right time in where you can avoid the frustration by preparing for these examinations. Do not take it lightly because once you let go of these ideas, once you let go of these jobs, this time will not come back. Right? This time will not gap. तम्मो मानकु ही निजे कष्ट करिया को पड़िबो in order to get that job, in order to get that post for yourself. Right? So good evening everyone. Good evening Sunita. Good evening Shashmita. Good evening everyone. So yes, as I was talking about OPSC PGT रो classes भी हमारा regularly मुका भी history विषय रे history रो regularly courses चालू ची OPSC PGT OPSC level रो गोटे job निज पाखरे रहिबा माने होची माने that is a golden chance तम माने को पाखरे एटा रही ची जेतेबेले you can go and you know get for yourself this one job right तो एटा भाबी नियो माने ए जो 2-3 मास जहा तुम परिश्रम करि परिबो then next 50 वर्ष तुम बहुत भले रहिबो बुझी होची तो या परे तुमको चांस मिलवाटा बहुत कष्ट हो जिवो एटा एग्जाम विश्वरंजन राउत पचाला मैम एग्जाम केबे जय श्री राम रिंकू जय श्री राम तो हमर विश्वरंजन राउत पचाला मैम एग्जाम केबे होबो नोटिफिकेशन एज यू ऑल नो विद्याकर जेबे भी जहाँ भी तुम माने समस्त टेलीग्राम चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो सब्सक्राइब करिकि रुह सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल जहाँ भी नोटिफिकेशन आसबो इमीडिएटली हम टेलीग्राम चैनल रे आसी जाए be it regarding the official notifications or हमारा class related सब notification हमारा विद्याकर channel रो you know विद्याकर telegram channel रे आसी जाउची right so you cannot as I was saying you cannot take these examinations very lightly कि हाँ ठीक अछि एबे न हैला आउरी मो पाखे टाइम अछि ए जॉब टा न हो ठीक अछि मु आउ किछि पई ट्राई कर देबी आउ कहा पई ट्राई करबो 5 वर्ष जदी जॉब किछि आसीबोनी जदी गवर्नमेंट आउ किछि नोटिफिकेशन ही बाहर करबोनी तो तमे कोन टा भी प्रिपेयर करबो बुझी होची तो अवॉइड दैट पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन बाय वर्किंग हार्ड राइट नाउ एंड हाउ डू यू वर्क हार्ड तमरो गोटे क्लैरिटी थिबा दरकार यू हैव टू हैव अ फोकस कि कोन पई मु लढुची तो एग्जामिनेशन अच्छी नोटिफिकेशन आसीबो डू नॉट वेट मैम मु प्रियदर्शिनी हेलो अच्छा अच्छा ठीक अछि हेलो प्रियदर्शिनी सो से जिनसटा कि एबे ही तुम पाखरे टाइम अछि टू प्रिपेयर वेरी हार्ड एंड हाउ डू यू प्रिपेयर विद द गाइडेंस ऑफ विद्याकर क्लासेस तो आज मु कहि छी तुम को प्रूफ देखेबी जदी प्रूफ न देखे परले तुम मोर ना चेंज कर दबो हैला ट्रस्ट मी तो जिनसडा होची कि ब्रह्मास्त्र रो पावर पैक जोडा रहिला कि एवरी ओडिसा रे जो कोनोसी भी एग्जामिनेशन अछि तार ब्रह्मास्त्र रो हमें दोचू at 6,999 rupees and the Trishakti power pack by any 3 courses at 3,399 right मैम एसएसबी पुनी न्यू नोटिफिकेशन केबे आसीबो से जिनसटा मो हस्बैंड का पीसी रे क्लास करूची राइट ठीक अछि प्रियदर्शिनी अंडरस्टूड एंड टिकू पचारला मैम एसएसबी पुनी नोटिफिकेशन केबे आसीबो यस सो द थिंग इज नोटिफिकेशन आसीबार अछि मार्च मास रे and that will
मैम प्रणाम ओसीएस पाए केबेठू क्लास हबो ठीक अच्छे सबू जिनस गोटे गोटे आंसर करी टिकू पचारा मैम एसएसबी पाए पुणी केबे नोटिफिकेशन आसीबो देख पिला आज मु कहूची आज ही काउंसलिंग हेतिला 28 की 28 को पाखा पाखी आज ही काउंसलिंग हेतिला एंड मन रख तांको मार्च फर्स्ट वीक रे पाखा पाखी तांको मिली जिवो तो कुहा जाउची देयर इज अ चांस दैट मार्च रे ही हमरो नोटिफिकेशन आसी पारे एसएसबी लेक्चरर एग्जामिनेशन बुझी होची एंड एलेक्स पचाला मैम ओसीएस पाए क्लास केबेटू होबा जेबेटू भी होबा वी विल लेट यू नो इमीडिएटली कि क्लासेस हमरो जो टेलीग्राम चैनल अछि सेटा जॉइन करी रखिता इमीडिएटली तुमको सेठी इंफॉर्मेशन पळेबो सो मु एटा कहिबा पई चाहूची कि लिंक टा प्लीज मैक्सिमम जनक सहित शेयर करो so that बेसी पिला जॉइन कर परिबे we will be discussing the questions in a very detailed format today हैला एंड जे कोनोसी भाबरे तुमको जोठी भी डाउट होबो त माने आसी कि इमीडिएटली पचारि परिबो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लाइव क्लास प्लीज लिंक टा शेयर करो so that maximum students join राइट तो आजिरो हमरो चैलेंज मते गोटे दिया है माने मु निजे निजो को गोटे चैलेंज दे नेची हैला ये तोहफा हमने खुद को दिया है दैट आई विल try to like tell you the exact question which were discussed in our classes जोटा मु निजे एग्जामिनेशन आगुरु डिस्कस करछि विद्याखर क्लासेस रे एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड जदी सेडा मिलिलानी ताहाले मोरो ना चेंज कर राइट सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एटा तो हमें ऑब्वियसली डिस्कस कर चाहछु बट एटा रे मु निजो को पॉइंट्स देबिनी एटा बहुत इजी एटा तो डेफिनेटली आसीवर ही थिला कि who said history is an unending dialogue between the societies who said that history is an unending dialogue between the past and the present a particular jinsota kiye kahichanti please try to answer immediately that who said history is an unending dialogue between the past and the present or who said that history is an unending dialogue between the societies who made this particular statement तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस आर आरजी कॉलिंगवुड हेरोडोटस विल ड्यूरेंट ईएच कार सो करेक्ट आंसर इज ईएच कार राइट प्लीज लेट मी नो द आंसर एंड तुम मानक पय गोटे ट्रिक अछि सो दैट यू यूटिलाइज योर ब्रेन तो माने ऑप्शंस ए बी सी डी एमती आंसर करबनी हैला तुम मानक पय जब तुम एबे सी आंसर करथान तो माने ताले तुम भाबी कि सपोज एटा भाबी कि करथान तो ए ऑप्शन रे लिखाई छि डी तो मेक श्योर यू राइट द एंटायर आंसर तो ईएच कार कहिथिले हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द सोसाइटीज एड़ा को चैप्टर में पढ़िथिलु सबिता रानी यस इट इज ईएच कार हैला इट इज ईएच कार ही सेड द स्टेटमेंट दैट यस दैट हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट एड़ा को चैप्टर थिला एड़ा थिला चैप्टर माने सिलेबस रे को यूनिट रे थिला यूनिट 1 रे थिला पिला माने यूनिट 1 रे थिला ईएच कार वेयर वी रेड अबाउट ऑल द हिस्टोरियंस एंड द रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स तो हमरा आरजी कॉलिंगवुड लेखिथिले कोन आइडिया ऑफ हिस्ट्री एटा भी हमें पढिछु आइडिया ऑफ हिस्ट्री लेखिथिले एंड आउ गोटे जिंस मन रखिबो हेरोडोटस को हमें समस्त चलिछु हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री समस्त एटा चलिछु कि हेरोडोटस को हमें फादर ऑफ हिस्ट्री कहूछु बट द क्वेश्चन दैट हियर माने आमे फर्दर एग्जामिनेशंस रे जहा एक्सपेक्ट कर परिबा इज who gave the title to Herodotus as the father of history एटा आंसर करिया को चेष्टा करो कि हेरोडोटस को तो समस्त कहउछ हमें फादर ऑफ हिस्ट्री बट who was the person who called him the father of history there is a specific person and hint is he belonged to the Roman civilization एटा आंसर करो समस्त इंफॉर्मेशन गोटा बहुत पर्टिनेंट प्लीज नोट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डाउन एंड विल ड्यूरेंट लिखिथिले गोटे बहुत ही बढ़िया बही that is the story of civilizations is a book that was written by Will Durant हैला तो the answer regarding Herodotus तमाने बेसी टाइम नेले मु तुमको आंसर करिया को देबिनी एंड आई विल आंसर बट चेष्टा कर आंसर करिया को तो आंसर for Herodotus who called Herodotus as the father of history this is the basic information extra information पाएंगे we have Vidyakar classes this is the kind of content तो सेटा होची it is Cicero हैला Cicero who was the Roman orator पिला माने मन रखिबो he was the Roman orator who said the particular statement that he called Herodotus as the father of history clear and another thing that you have to remember is Herodotus wrote a book एटा तो समस्त जानिथिबो Herodotus wrote the book which is called as histories सबिता आंसर करो एठी आज सबिता आंसर करो सबिता टिकू एंड जो माने एलेक्स अच्छ कादम्बिनी अच्छ सौम्यश्री जो माने भी समस्त अच्छ सेटा माने आंसर करिया को चेष्टा करो कि एठी जो
Yes, it is जो लिखा है histories. Histories was about what? Histories was about what? Yes, yes, Rinku कहला Marcus Cicero. Cicero कहिथिले. Yes, absolutely correct. It is Cicero who is the Roman orator who called Herodotus as the father of history. And I would say that histories, what Herodotus wrote about histories was histories of content kon thila. It talked about the Greco-Persian war, right? It talked about the Greco-Persian war. हैला तो क्लियर हैला क्वेश्चन रो पूरा हमें एनालिसिस देखो एनाटॉमी हे गला हमरो हैला नेक्स्ट हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर हु सेड इट राइट एटा आंसर करिया कुछ चेष्टा करो आंसर करिवा को कि हु सेड हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर प्लीज ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इमीडिएटली तमरो जेते शीघ्र आंसर करिवा गोटे क्वेश्चन सेते शीघ्र हमें मूव ऑन करि परिवा नेक्स्ट क्वेश्चन तो पिला माने देखो बुझो क्वेश्चन टा केमती हमें अप्रोच नबा तो एटार आंसर तो हमें देखि दबा बहुत इजी एटा अछि हु सेड हिस्ट्री साइंस नो लेस नो मोर इट इज वेरी इजी इट इज जेबी बरी सिंपल इट इज जेबी बरी देन हमें अन्य जिंस को जिबा अन्य जिंस भितर मन रखिबो दैट थुसिडाइडिस जे थिले से कोन लिखिथिले ही इज एक्चुअली वन ऑफ द पर्सन्स हु ट्राइड टू राइट साइंटिफिक हिस्ट्री मन रखिथिबो ही इज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू राइट साइंटिफिक हिस्ट्री से कहा विषय लिखुचंदी को पर्टिकुलर हिस्ट्री विषय लिखुचंदी मन रखिबो ही रोट द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर्स राइट ही रोट द हिस्ट्री अबाउट द पेलोपोनेशियन वॉर्स हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर्स तो एटा हमर को टाइम विषय कथा होची हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर हमर जते बेले डेलियन लीग हेथिला पिला माने डू यू ऑल रिमेंबर the Roman civilization, the Greek civilization, amara Greek civilization re dita thila major areas, Athens and Sparta, where Sparta was mostly the military state, Athens mostly dependent on knowledge, right? Athens mostly dependent on knowledge. तो एथरे गोटे जिंस मन रखिबो that within the जो जिंसडा होची Athens and Sparta भितर जो गैप टा अछि सेटा में फर्दर देखि परिबा कि तांकर जो टैक्टिक्स अछि सेटा देखि परिबा जतले ग्रीक माने पर्शियन माने आस्ट्रंती लढिया पाएंगे तो गोटे अलायंस फॉर्म हिथिला विथ ऑल द ग्रीक सिटी स्टेट्स जोटा कि कुआ जाउथला डेलियन लीग मन रखिबो दिस इज नोन एज द डेलियन लीग वेयर एथेंस वाज चोजन एज द लीडर टू रिप्रेजेंट स्पार्टा एंड अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स राइट so that is what he said and Rousseau is one of the people who talked about who is one of the intellectuals of the French Revolution, right? He is one of the intellectuals of French Revolution. So please try to remember French Revolution रे हमें मन रखो कि जिनसडा होची French Revolution में बहुत गुडे intellectuals थिले जेमते कि we had Montesquieu, right? We had Montesquieu and we had Voltaire, right? And we also had Rousseau, right? We also had Rousseau. So what happened is these three people wrote like said very pertinent things. One was Montesquieu talked about the first thing that he talked about, like he talked about two things basically, theory of separation of powers and theory of checks and balances, right? These are the basic things because what had happened in the French Revolution or in the French dynasty prior to French Revolution is that the power was just concentrated with the Bourbon society. So Louis XIV, Louis XV, Louis XVI were not very responsive towards the people of India and the entire state treasury जहाँ भी कोची बुझी होची न बुझीला डाउट पचारियो हला तो जहाँ भी हमारो स्टेट माने treasury थिला that was being drained away towards the wars and not towards the benefit of the people. So they Montesquieu basically propounded the idea that there should be a separate judiciary, executive and legislature so that the three organs are there and nobody does exercise arbitrary powers, right? That was the idea. Then we had Voltaire who talked about enlightened despotism. Enlightened despotism माने एबे कौन देखो enlightened despotism. Despot माने कौन? Despot माने जे autocratic ruler थिबो. Autocratic ruler re we also have Ashoka who is also autocratic ruler but we see his paternalistic ideas, right?
तो एमती तुम जिनसा कनेक्ट करके वोल्टेयर जो जिनसा कहउछन ही इज टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एज इन देयर विल बी मोनार्की व्हिच विल बी बैक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. देन वी हैव रूसो. रूसो कर आइडिया थिला हमर मेजरली ए गोटे लाइन तुमको कहि दोछि जोटा के तुम समस्त जानि परिबो, व्हिच इज मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. ए आइडिया टा समस्त ए पर्टिकुलर लाइन टा समस्त मन रखिबो, एटा भी क्वेश्चन रे आसी पारे. तो मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स. दिस पर्टिकुलर आइडिया वाज प्रोपाउंडेड बाय रूसो. अंडरस्टूड? तो ए जो जिनसाटा होछि आमे रूसो के विषय रे जानिलु. रूसो हमरो लिखिथिले जो कौन ता कहती कही थिले कहा विषय ना अबाउट एजुकेशन व्हिच इज रिसीव्ड थ्रू रिसीव्ड वेरी नेचुरली, natural education जोटा. and one of the greatest products of this natural education is actually Akbar. बुझियोछि अकबर मुगल रूलर अकबर काहे कि नेचुरल एजुकेशन माने से कहउथिले कि आमे खाली घोषा पाठरे विश्वास करबानी, आमे जिनसाटा बुझिबा एंड बुझी कि लाइफ स्किल्स ऊपर मेजरली फोकस करबा. So Akbar was not a learned person. Akbar हम मुगल रूलर अकबर was not a learned person, right? जो माने भी जोधा अकबर मूवी देखि थिबो जतल जोधा भाई देखौछन गोटे लेखि किछि जिनसटा पढी पर नांते अकबर, and from that like that is obviously a cinematic discourse, but the thing is Akbar was not a learned person, but he was a very efficient administrator. He was a very efficient ruler. Why? Because of his skills, right? So skills of understanding people, of understanding the administration in particular, and ensuring there is equality. So sage insata yes तो से जिनसटा रूसो कहिचन. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हाट इज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी. गोटे क्वेश्चन को तुम जब एमती पूरा एनालाइज करके जिवो एमती पूरा डिटेल्स बाहर करियो बहुत टाइम लागिवो, एंड हमर टाइम अछि वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स टुडे, राइट? तो नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी. समस्त चेष्टा कर आंसर करिया को. विश्वरंजन, सबिता, सॉरी प्रियदर्शनी, सेटा प्रियदर्शनी, सबिता, प्रत्युष, टिक्कू, सस्मिता, सौम्यश्री. आंसर करो व्हाट इज हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी. ऑप्शंस वाला पढ़ी दोची. टू राइट हिस्ट्री बाय कलेक्टिंग द फैक्ट्स, टू राइट हिस्ट्री थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, टू राइट हिस्ट्री विथ प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस, और to reveal historical truth through different methods and analysis of the facts, right? Good evening Tikeshwar, good evening Tikeshwar. To write history by collecting the facts, to write history through verification of sources, to write history with proper interpretations, or to reveal historical truth through different methods and analysis of the facts. हला एटा आंसर करो, एटा आंसर करो समझते. Yes, it is D actually. To reveal the historical truth through different methods and analysis of facts. To reveal the historical truth through different methods and analysis of the facts. Right? Yes. So historical objectivity विषय टे कहि दोची. Objectivity amaro pakha pakhi this idea came forward in like post enlightenment period. Yes, historical truth and analysis of the fact. This idea of objectivity came in the enlightenment period when people tried to define every subject, every social subject. तो जिनसड़ा कौन थिला से माने कहा ऊपर फोकस करथिले. टू मीन हिस्ट्री मेजरली बैक देन basically consisted of the ideas of theology, of philosophy and of mythology. जिनसड़ा बुझिया को चेष्टा करो समझते. हिस्ट्री कंटेन करथला थियोलॉजी, फिलोसफी, माइथोलॉजी, तीनटा जिंस को कंटेन करथला. तो सेथि पई कि तारो जो माने ताको सेपरेट करके हिस्ट्री एज अ साइंटिफिक स्टडी पई कि डेवलप करथिले द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. तो कौन कहूथला ऑब्जेक्टिविटी कि सबु फैक्ट्स एंड एनालिसिस रहिबा कथा. दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ हिस्टोरियंस इंटरप्रिटेशन or not just facts, it is an amalgamation of both the facts as well as the historians interpret, right? तो ये जिनसटा ऊपर जेतबे से माने ऑब्जेक्टिविटी रे फोकस करले that is where माने ऑब्जेक्टिविटी रे सेतबे से माने कोन कहउचंती कि दीटा लोक थिले, जणे थिले रांके and we have Nepur, right? These two people talked about objectivity.
and objectivity रो गोटे stem टा आसिला सेठू objectivity रो गोटे stem आसिला which is known as positivity, right? Objectivity रो गोटे stem टा आसिला which is known as positivity, which was propounded by Auguste Comte. Clear? Next question को जिबा. In which of the following civilizations there was a conspicuous progress in the field of medicine? The field of medicine, who wrote idea of history? Tikku Pachala ma'am, who wrote the idea of history? Idea of history was written by R.G. Collingwood. Pila mane mane rakhibo that the idea of history was written by R.G. Collingwood, right? Idea of history was written by R.G. Collingwood. Clear? And then mane rakho next question ko jiba ki which of the following civilizations there was a conspicuous progress in the field of medicine? Conspicuous progress in the field of medicine. Chesta karo answer kariya ko. Conspicuous progress in the field of medicine: Mesopotamia, Egypt, Indus Valley, China. It's a very easy question. Ko field re medicine pai ki maximum yes karthile. Option D, that is China. Absolutely correct. Medicine pai ki semane maximum mane kon steps needs only because anesthesia which is a medical genius. Anesthesia, which is a medical genius, that was created by Then, who were the first to make regular use of horses for war chariots and to make iron implements? Eta answer kariya chesta karo. Who were the first to make regular use of horses for war chariots and to make iron implements? Eta answer kariya chesta karo. It's a very easy question, and this was this is also one such question, right? This is also one such question. हमने जाए कि classes जो मैंने attend करी ना, जो मैंने SSB lecturer रो किचटा classes attend करचो सिम्माने देखी थी वो. We talked about this particular question while way before the exam. Way before the exam we had discussed this particular question. इटा discuss कला बड़े हमें discuss करथलु कि केतेटा प्रकार रो माने बेसिकली जतले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विषय में कथा होछु ता देरे बहुत इन्वेजन्स हेथिला. तो कैसाइट्स थिले, हिटाइट्स थिले, मिटानी रेस थिले. तो एते सब भितरे the correct answer is yes, it is Hittites. The Hittites were the first to make use of war chariots and to implement iron. Hela eta hochi answer. Egyptians, Indus Valley civilization, Chinese Valley civilization बाकी ऑप्शन दे देइछि. तारो रेस्पेक्टिव जहाँ भी यूजफुलनेस अच्छे सेटा में फर्दर क्वेश्चंस रे भी देखिबा. The scientist of which civilization invented the first seismograph to record earthquake? तो earthquake पाई के हमें presently देखुछु कौन होची. earthquake पाई के presently हमें देखुछु that there are several machines. हमें Richter scale देखुछु, seismograph देखुछु जोटा कि earthquake measure को. Back in the days of civilization जते बड़े आमर फर्स्ट आम जदि कहबा कौन ताको कि बेसिकली देखिया गले आमर जो अर्थक्वेक मेजर करिवार जो इंस्ट्रूमेंट अछि सेटा को सिविलाइजेशन ये करथिला. द करेक्ट आंसर इज मेसोपोटामिया, चाइना, इंडिया और इजिप्ट. द करेक्ट आंसर इज yes, the correct answer is China. The correct answer is China. हला चाइना रे फर्स्ट टाइम पाई से माने सिस्मोग्राफ यूज करथिले. आउ कोन आनिथिले गनपाउडर. पिला माने मन रखिबो they also invented the use of gunpowder. Use of gunpowder, right? Next is what is not true. What is not true about the Athenian democracy? What is not true about the Athenian democracy? The power of 4 tribes was equally distributed among the newly organized 10 and each tribe sent 50 to the council of 500, right? The council of 500 was a body that administered laws and controlled the magistrates. Then amara asila ki as no member could continue in office for more than 2 terms, and therefore the number of citizens got opportunity to work in the council. And then the women and slaves could also exercise their voting rights. This is a very easy question. Etara ete bhabbi bala kishi question hi nahi. Jinsara diya hai that women and slaves could exercise their voting rights. Absolutely not. Absolutely not. Women and slaves did not get the right.
इवन जोटा हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन रे हमर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आसुची डिक्लेरेशन हैला सेटा हमर एथेनियन डेमोक्रेसी माने हमर एंशिएंट सिविलाइजेशन विषय हमें कथा होचू एटी फ्रेंच रेवोल्यूशन रो जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो आसिला मन रखिबो राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ई जिनसटा जोटा आसिला तो even this as a question मन रखो declaration of the rights of man and citizen this was called as the Magna Carta right this was called as the Magna Carta माने कौन पिला माने एटा आंसर करो जो माने क्लासेस अटेंड करछो जो माने क्लासेस अटेंड करछो ओपीएससी पीजीटी रो से माने आंसर करो Magna Carta माने कौन से माने आंसर करो Magna Carta काहे कि सब जिनसटा हमर जतले एजुकेशन टाइम भी हमर आस्तिला वुड्स डिस्पैच को भी से माने मैग्ना कार्टा कहउथिले काहे कि मैग्ना कार्टा कहउथिले सेटा आंसर करिया चेष्टा करो मैग्ना कार्टा रो बस मीनिंग टा कहिथिलो हैला तो इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन स्लेव्स एंड वुमेन डिड नॉट गेट द राइट टू वोट हैला इमान को कहा जाउथिला पैसिव सिटीजन्स राइट दीज वर कॉल्ड एज द पैसिव सिटीजन्स क्लियर सो द आंसर इज द पावर ऑफ 4 tribes was equally distributed among the newly organized 10 and each tribe sent 50 members to the council and therefore it had council of 500 10 माने हमरो equally distributed among the 10 10टा tribes थिला and each sent 50 members that is 500 so हमरो council of 500 formation right then next question हमें जिबा कि when did the Romans establish their republic beginning of the 3rd century BC, end of the 6th century BC, 1000 BC, na 6 to 65 BC. Please try to answer this. Please try to answer this particular question that when did the Romans establish their republic? Beginning of the 3rd century BC, end of the 6th century BC, 1000 BC or 265 BC. So on the establishment of the Roman Republic, mu kahiba ku chahunche there were two people, hela Romulus and Remus who had established or who had founded the Roman Empire. Romulus killed Remus and went forward to become the ruler of the Roman Empire. Clear huchi? So answer is C. Next, what is not correct about the social structure of Rome? What is not correct about the social structure of Rome? Hela jaldi answer karo. We have not even completed like 10 question 10टा 15टा क्वेश्चन भी हमर सॉरी नहीं एबे बहुत एबे 100टा क्वेश्चन करियर अछि ला द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ रोम द aristocracy owned large estates and held high public offices there were wealthy merchants and bankers there were plebeians and small independent farmers and the absence of slaves was conspicuous the coach aristocracy owned large estates and held high public offices. Then we have there were wealthy merchants and bankers. There were plebeians and small independent farmers. The absence of slaves was conspicuous. The पचाची not correct है ला ये जिनसटा ऊपर focus करिवा not correct about the Roman civilization. तो हमें individually देखिवा each question देखिवा each statement देखिवा जोड़ा correct है ना तो बस एटा आंसर तो aristocracy owned large estates and held the high public official that is correct. There were wealthy merchants and bankers. This is also correct. There were plebeians. The Roman society was divided into two groups. Mane rakhibo. It was divided into patricians and plebeians. Right? It was divided into patricians and plebeians. And the thing is, anko bhitare plebeians manankar population adhika thila. They had a larger population. They also they're the people who paid the taxes. But initially only the patricians had political rights, right? Only the patricians had political rights. Clear? Only the patricians had political rights. So, this situation में मन रखिबो that the plebeians were the people who fought, and that is why there was a बने हमें देखिबा changes in the Roman society where a code of 12 tablets, law of 12 tablets, code of 12 tablets was हैला तो आ भितर हमर आंसर हबो
The absence of slaves was conspicuous. Hela, eta no, slaves were present. Hela, slaves were present. Then name the Roman emperor who did allow the Christians to build the churches and worship openly rather than in secret. Eta answer kariyak chesta karo. Name the Roman emperor who did allow the Christians to build the churches and worship openly rather than in secret. Please try to answer this. तो देखिबा हमें किए रोमन एम्पायर आंक भितरु जे कि क्रिश्चियंस मानकर अलाउ करले तांको बिल्ड चर्चेस एंड टू वर्शिप ओपनली रादर देन इन सीक्रेट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट? ऑप्शन सी, कॉन्स्टेंटाइन, राइट? Constantine, who allowed the Christians to build churches and pray in freely. Under the patronage of which king the English version of the Bible came to be used for public? James I, Charles I, Charles II, James II. Please try to answer this. Please try to answer this. Under the patronage of which king the English version of the Bible came to be used for public? The James I, Charles I, Charles II, James II. Correct answer is James I. James I. Everybody please try to answer. Do not slow down. Please try to answer. Right? So, which of the following religious scriptures emphasizes such virtues as to free the captive or to feed in a day of famine the orphan who is a kin or the poor man who lieth on the ground? Please try to answer this question. Eta easy question achi. Please try to answer this particular question. Which of the following religious scriptures emphasizes on the virtues? Emphasizes on the virtues. To free the captive or to feed in a day of famine the orphan who is a kin or a poor man who lieth on the ground. Please try to answer this particular question. देखो एटा religion chapter वास्ते religion रे हमर दीटा religion ऊपर हमर basically focus करिबार अछि. We have to focus on Christianity, right? We have to focus on Christianity and Islam. दीटा भितरु try to answer. Try to answer everybody. Right? Yes, option A. Right? Next is, which statements given below is not correct about the feudal system in Western Europe? Right? Is not correct about the feudal system in Western Europe. When the king fought a war, he could demand military assistance from his vassals. These vassals, the dukes and the earls, demand the same assistance from their vassals, the barons, and the barons from the vassals, the knights. Right? Every feudal is not correct for Chachi. Which of the following is not correct regarding the feudal system in Western Europe? Every feudal lord contributed or a detachment of warriors, and thus fighting an army could be formed. Right? And then the feudal hierarchy. The feudal hierarchy was not so strong that even the king would call a baron assistance from him. Assistance from him. So, jinsada se kohuchi kaha bisare, we are talking about the feudal system that existed. We are talking about the feudal system that existed. Feudalism. Feudalism upare gote important information mone rakhibo. A detailed analysis was done by Mark Bloch. Right? A detailed analysis was done by Mark Bloch. And another important thing I would talk about is the basically the hierarchy, right? The hierarchy, the hierarchical structure that we are talking about. The topmost position was, taken over by the king. Then we had the vassals, right? Then we also had the knights, and then the peasants, right? Then the peasants, right? Rich class people and plebeians were the slave and farmers. Absolutely correct. तो आमे ये जो feudalism related हमारा Henry Pyrene thesis सेटा भी पढ़ी छु classes रे, हैला
क्लासेस सेथि पई ही कहा जाउची रेगुलरली अटेंड करिया को प्लीज फोकस ऑन क्लासेस प्लीज इट्स हाई टाइम नाउ यू फोकस ऑन योर करियर एंड डू अटेंड दी क्लासेस राइट आउ मु आपरे आहुरी अधिक फोकस ही करि परबिनी कि केते इंपोर्टेंट अछि आजिका दुनिया रे निजो पई कि गोटे माने परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट निजो पई रखिबा बुझी होची डू नॉट लेट दिस पर्टिकुलर चांस गो एंड हमें देखिबा yes the thing is when the king fought a war he could demand military assistance from his vassals obviously eta ame hierarchy dekhile the king could demand military assistance from the vassals in return could give that and tanku miluthila kono land miluthila hela jinsata hoche eti dekhiba so next this is correct the vassals dukes and earls demanded the same assistance from their vassals that is the barons and the barons from their vassals that is the knights hela तो vassals मानकर भी ये थिला हला बुझी होची क्लासेस थिला तो से मानकर knights जो माने कि ताऊ मिलिटरी असिस्टेंस जो थिले next is every feudal lord contributed a detachment of warriors and thus a fighting army could be formed this is correct and the feudal hierarchy was not so strong this is wrong feudal hierarchy was very strong la option D feudal hierarchy was very strong please remember that the feudal hierarchy was extremely strong name or find out the incorrect pair from group A and group B this is extremely easy या to easy अब से question आसी पारी न थांदा हैला जोटा आमे एटा ए सिमिलर क्वेश्चन डाकू ए फॉर्मेट रे डिस्कस न करी कि आमे डिस्कस करथिलु कि लास्ट सपर was a work or masterpiece of which of the following people the fall of a man was a masterpiece of which of the following people सेमती सबु थेरे जदि देखिबा ताहाले इनकरेक्ट पेयर हमरो होची ऑप्शन सी मन रखिबा पिला माने इनकरेक्ट पेयर होची हमरो ऑप्शन सी वेयर हमरो ऑप्शन सी जो देची डांटे he wrote utopia that is wrong hela utopia was written by Thomas More hela utopia was written by Thomas बाकी सब तो ठीक अछि try to note it down next is please try to remember yes the answer is incorrect pair from the group that is group A and group B as given below Machiavelli the prince Rabelais the Pantagruel and Boccaccio Decameron then we have John Milton मन रखिबो Thomas Paine नुहे Thomas More Thomas Paine नुहे Thomas Paine आउ जणे मन रखिबो पाड़ी ला Duke, earls and earls means कौन मैडम तो एठी जो हमें देखिलु हला Duke and earls हमें देखि परिबो Dukes, earls हला then तांकर असिस्टेंस थिला barons तो हमरो जेमती मु पूरा लेमन टर्म्स रे बुझिया को चेष्टा करबी देखो एटा गोटे obviously this is the ruler this is the state माने central ruler अछि king then king will have certain governors hela king will have certain governors semananku duke and earls kuha jautila hela duke and earls and then these duke and earls had certain people which is and these people are called as barons hela and these barons had the ankara bi vassals rohutila semane kiye thile na knights hela clear then we have the correct incorrect pair from group A and group B जदि हमें देखे इस yes feudalism प्रत्युष कहला 9th to 14th century absolutely correct हैला हमें ये ऊपर जदि फोकस करबे आउट के feudalism रो time period जदि हमें देखिबा को जिबा 9th to 14th century अछि and this was divided into two phases मन रखिबो 9th to 11th is the first phase hela 11th to 14th is the second phase first phase रे हमें देखिबा decline of population and second phase रे increase of population hela मन रखिबो why
because there were not enough sources in this first period. First phase re not enough sources नथिला, not enough sources, and second period रे sources बहुत अल्प आसिला, माने बहुत अल्प मन रखिबो. Why? Because एठी गोटे historian गोटे statement बा गोटे theory देइछन. This might also come as a question. Thomas R. Malthus, Thomas R. Malthus, and he basically was of the opinion, Thomas R. Malthus was of the opinion, मन रखिबो. Thomas R. Malthus कहचंदी दीटा जिंस, गोटे होची geometric progression and आ गोटे होची arithmetic progression. हला तो हमरो population टा मन रखिबो, that our population grows in geometric progression while our resources grow using arithmetic progression. हला our population grows using geometric progression, resources grows using arithmetic progression. Clear hela? So this particular instance I will gote example dekhi कहबी. Population grow करिबो जदि a year 2 4 8 16 32 64. This is the order, like this is how the population will grow, and if we have to focus on the resources will grow in arithmetic progression, right? Arithmetic progression माने this 1 2 3 4 एटा धीरे धीरे ग्रो करला से एक्सपोनेंशियली ग्रो करिवो. बुझी होची एटा ए सब जिंस ऊपर एई गुडा ही आसीबो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन तो से रिपीट करिवनी, तो सेम क्वेश्चन पर हम एक्स्ट्रा टा कोन इंफॉर्मेशन पाइबा ता ऊपर समस्त फोकस करो हैला. तो एटा जो आंसर टा अछि इनकरेक्ट पेयर गिवन बिलो मैकियावेली माने करेक्ट अछि. राबेलियस पेंटाग्रुएल दिस इज आल्सो करेक्ट. बोकाशियो लिखि छथि डी कैमरन, बट द मर्चेंट ऑफ वेनिस हैला. मर्चेंट ऑफ वेनिस कोन होची? मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखि छथि शेक्सपियर हैला. तो आंसर होची ऑप्शन डी. Which of the following is incorrect pair? Option is right. Under the patronage of which monarch of England the Protestant movement gained momentum? Charles II, Henry VIII, Queen Elizabeth, Queen Mary. एटा आंसर करो समझते. During whose rule, during whose movement, during whose time period the Protestant movement gained momentum? Charles II, Henry VIII, Queen Elizabeth, Queen Mary. चारटा options रो 35 टाइम. हाँ तो एटा आंसर करिया चेष्टा करो हैला. तो एटा आंसर हबो हमर जो पेट्रोनेज हमर देखो एटा कोन पाई आसीथिला. वेरी इंटरेस्टिंग क्लास. अच्छा तो नेक्स्ट हमें देखिबा हैला. तो नेक्स्ट द अंडर द यस to the Protestant movement, right? So we are talking about Renaissance and Reformation, right? Say time period रे हमें कथा Renaissance and Reformation time period रे जदि हमें कथा हबा हैला. तो if we go back to this every question रा हमरो टिके historical analysis देखिबा. Renaissance Reformation period एटा तो समस्त Renaissance rebirth Reformation हेतला जर्मनी रे स्टार्ट हेतला. मार्टिन लूथर करथिले 95 thesis लगेइथिले. एटा कोसा थिबो समस्त जिंसडा एठी कोन मन रखिवार अछि. Why did the Reformation movement happen? Because there were Catholics. This was a basically fight जदि हमें देखिबा. It was a fight between the Catholics and the Protestants, right? And the Protestants. Catholics and the Protestants. Clear? Yes. Catholics and the Protestants, right? दी जन को भितर जो वॉर टा होची कैथोलिक्स हमर जो रोमन चर्च थिला तार पावर टा बहुत अधिक. रोमन चर्च टा जोटा थिला तार पावर अधिक. हमें देखिबा माने इट वाज ट्राइंग टू बी वेरी माने वेरी करप्ट, राइट? द प्रोटेस्टेंट्स वर देयर. दिस वाज द यू नो दिस इज अ लाइक एटा आसीथिला मेनली कैथोलिक्स मानन को चैलेंज करिया पे, राइट? तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें देखिबा हुज पेट्रोनेज रे जदि हमें देखिबा कि कहार अंडर माने कैथोलिक्स माने कोन करथिले ना एते करप्ट हे जायथिले दैट से माने कोथले गोटे लैंड को से माने निजे चर्च एज अ सेक्युलर माने इंस्टीट्यूशन बुझो.
कि चर्च रा गोटे सेक्युलर इंस्टीट्यूशन चर्च हबा कथा कोन चर्च शुड टॉक अगेंस्ट ग्रीड अगेंस्ट करप्शन चर्च ए सब अगेंस्ट रे कहबा कथा बट चर्च वाज रादर यू नो paying attention to having a certain land under itself so that तार administration टा निजे करी revenue रो पैसा से निजे पाखरे रखिबो so in a way it was challenging the authority of the monarchs right in a way it was challenging the authority of the monarchs and say particular situation हम देखा monarchs माने भी actually support करूचंती हमरो कोन कोता कहती protestant movement हला तो आंसर होची हमरो चार्ल्स 2 हेनरी 8 क्वीन एलिजाबेथ क्वीन मैरी हला चारटा हमरो आउ के आंसर दी ना खाली गोटे क्वेश्चन रो गोटे पिला आंसर दोची टिकेश्वर बाकी समस्त आंसर दियो प्रियदर्शिनी कादम्बिनी समस्त आंसर करो ला तापरे हम मूव ऑन करबा नले ए आंसर टा को हम बुझुतबा क्वीन एलिजाबेथ तो हबनी एलिमिनेट कर दियो जदि आसुनी एलिमिनेट कर दियो क्वीन मैरी भी हबनी ए दीटा भितरु गोटा हबो हला हेनरी 8 एंड चार्ल्स 2 ए दीटा भितरु गोटा हबो हेनरी 8 जते मन पडुची हमरो जते बेले स्पेन आ पोर्तुगाल रो जो माने हेनरी 8 थिले ताको नेविगेटर कुआ जाउतला हेनरी दी नेविगेटर हला यस ना इट्स चार्ल्स 2 हला जदि हम देखिबा तो आंसर होची नेक्स्ट ए क्वेश्चन हला दिस इज द क्वेश्चन जदि ए क्वेश्चन टा मोर प्रीवियस क्लासेस रे जाय कि देखि दियो जदि ए क्वेश्चन टा नथिबो मो ना ही चेंज कर दबो ए एग्जैक्ट क्वेश्चन टा मैं डिस्कस करथलु पूरा सेम ऑप्शंस नै कि हला जता हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्लास रे डिस्कस करथलु सिमिलर क्वेश्चन मु ही क्लास रे डिस्कस करछि एटा हला तो तमे जाय कि देखो एंड तमे जदि माने तमे जदि आंसर टा माने जदि पाइलनी एग्जैक्ट क्वेश्चन टा ताले मोर ना चेंज कर दबो हला मु कहूची एटा पूरा डायरेक्ट हम डिस्कस करथलु स्पिनिंग जेनी ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रा पूरा क्वेश्चन ए क्वेश्चन टा प्लस ए क्वेश्चन टा ए दीटा क्वेश्चन डायरेक्ट ही आसीची पूरा डायरेक्ट ही आसीची राइट माने तो प्रूफ मो कोन दे माने तमे जाई कि क्लासेस आउथरे देखो से एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शन सहित तुमको मिली जिवो न मिलिले मोर ना चेंज करिवो हला ए दीटा ही क्वेश्चन एग्जाम बाहर एग्जाम सरू थिला गोटे पिलाटा बाहर को आसी कि मैम ए क्वेश्चन डायरेक्टली आस्थिला कहिथिला तो सेमती सब सिचुएशन रे तमे देखि परिबो विद्याकर क्लासेस केते बेनिफिशियल रहउची बुझियोची तो तमरो क्वेश्चंस हो बा हमरो आंसर डिस्कशन हो सब जाका हमरो एथरे आसीबो हु डिड इन्वेंट द स्पिनिंग जेनी एटा आंसर करो स्पिनिंग जेनी हला एटा आंसर करो एटा हम पूरा डिस्कस करछु क्लास रे तुमको जदी डाउट होचे एटा आउथरे जाके रेफर कर दबो हला हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी जॉन के रिचर्ड आर्कराइट जेम्स हारग्रीव्स एंड सैमुअल क्रॉम्पटन ये चारटा जका ऑप्शन हमें डिस्कस करथिलु हैला एली विटनी सेटा नेक्स्ट क्वेश्चन रे आसुची एली विटनी एटा हैला हमरा से जो आस्तिले कॉटन जिन एली विटनी हैला कॉटन जिन हमरा एली विटनी हैला कॉटन जिन हमरा एली विटनी तो हमरा हैला स्पिनिंग जेनी एटा आंसर करो समझते यूनिफॉर्मली आंसर करो एटा जदी क्लासेस रे करी थिबो तमे हैला yes absolutely correct जेम्स हार्ग्रीव तो ये दीटा क्वेश्चन हम डिस्कस कलु ए दीटा ही आसीथिला हमें हला नॉट दैट से दीटा ही क्वेश्चन आसीथिला बाकी रादर सबु जाकर माने ऑलमोस्ट जो हमें ऑप्शंस रे भी हमें डिस्कस करचु यस ऑप्शंस रे भी जहां हमें डिस्कस करचु से गोडा सब आसुथिला क्लियर तो आजि रो क्लास हमें एठी रखिबा हला आजि रो क्लास हमें एठी रखिबा एंड नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करिबा रिगार्डिंग दी माने अदर क्वेश्चंस बाकी जहां सब क्वेश्चंस रहला सेटा डिस्कस करिबा तो आउ किछि कहार डाउट अछि एबे जाय जहां में डिस्कस कलु
एबे जाए कि जहाँ भी क्वेश्चन हम डिस्कस कलु किसी कार डाउट अच्छी जब इमिडिएटली हम पचारि पारिबो किसी फीडबैक दबार अच्छी किसी भी क्रिटिसिज्म दबार अच्छी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हैला किसी कार कहिबार अच्छी आउ गोटे मोर कथा गुड़ा को सीरियसली टिके नियो हैला डू नॉट टेक इट कैजुअली कि हाँ आज एग्जाम होउची पुणी आसीबो आर वर्ष पुणी से सेम एग्जाम टा हबो ता ऊपर डिपेंड करनी हैला तो मेक श्योर कि जो सब क्लासेस होउची तुम माने सब्सक्रिप्शन तारो नियो तारो ने कि तमे न ने कि तमे जो प्रिपरेशन एते लूज छाड़ी देइचो तमे ने कि तमरो माने साइमल्टेनियसली तमे देखि परिबो निजर तम जो सांग माने अछंती से माने भी को रेट रे तांको प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट करके केते आगु गलेनी बुझी होची तो मेक श्योर you also join the race and you also get yourself मैम एसएसबी पुणी क्लास केबेठारु हबो टिकू एसएसबी क्लासेस केबेटु हबो क्लासेस माने वंस जदी नोटिफिकेशन आसी गला इंटर माने जदी आमकु विद्याकर क्लासेस रो भी रिसोर्सेस थाए सोर्सेस थाए तो आमकु भी जदी किछि प्राइवेट इंफॉर्मेशन मिलु छि कि माने यू नो एग्जाम ए वीक रु हबो बा एठु एबे ए जो मंथ रे हबो वी विल इमीडिएटली स्टार्ट इट हैला So meanwhile, presently, do not miss out on the preparation of SSB TGT and OPSC PGT. हैला ए दीटा पाई preparation करो आउ गोटे information if you have qualified NET or if you have completed your PhD then you will directly have to just sit for the OPSC assistant professor. हैला तीनटा एग्जाम अच्छी जोड़ा कि मो आइडिया भीतर अच्छी ता संगरे आहुरी बहुत गुड एग्जामिनेशंस अच्छी जेमति कि हमरो आरआई रहिला एआरआई सीजीएल एलटीआर ओस्टेट सबु गुडा एग्जामिनेशंस अच्छी हैला एटा चांस टा पिला माने जो तमे एबे छाडी देलो ना आउ माने ए समयटा आ फेरिबनी हैला सेटा ही परे रिग्रेट टा रहि जिवो दिस हैला ए टाइम टा ही आ फेरिबनी तो मेक श्योर यू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ द कोर्सेस हैला एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ आगो गोल डिसाइड करो कि कौन लाइफ रे करिवार अछि मोर गोल कौन खाली किछि न करी गोटे घरे बसिबे किछि नै सेटा तो गोल कहार नथिबो तो एसएसबी टीजीटी कंपलसरी बीएड मैम हां टीजीटी रे हां कंपल माने बीएड टा रहिला बेटर हो हां माने बीएड ओपीएससी पीजीटी रे भी तो सेया बीएड टा कंपलसरी बट इफ यू बिलोंग टू द स्कूलिंग सब्जेक्ट्स जदी तमरो सब्जेक्ट अछि सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एगुडा सब ताले तमरो बीएड दरकार हैला तो बीएड टा भी करि दियो बीएड टा भी माने वर्षे 2 वर्षर कोर्स टा रहियो बीएड ही काहे कि छाड़िबो बीएड टा भी करि दियो आजिकली सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट हे गलानी बुझी होची तो मेक श्योर यू डू नॉट टेक दीज क्लासेस लाइटली हम भाबनी कि हां मन खाली आसी गोटे खाली कहि दोउछंदी विल जस्ट यू नो रैंडमली अटेंड द फ्री यूट्यूब क्लास एमते किछि नाही मेक श्योर यू एक्चुअली वैल्यू योर टाइम एंड आवर टाइम एज वेल हला निजर टाइम को वैल्यू करो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो गोल फिक्स करो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो हैला तो जे कोनोसी भी एग्जामिनेशन आसीबो सबुरो नोटिफिकेशन विद्यागर टेलीग्राम चैनल रे आसी जिवो सी यू एवरीवन गुड नाइट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।